Passengers traveling in Zone 1 are now welcome to start boarding. Welcome to Indigo. We would love to take off with you at the earliest. To help us get So I took notice too. In 200 meters, turn left onto Canal Road. I got the run. There's only one run. If I knew how painful love is, I would have stood at the entrance of the lane of the love. I would have proclaimed with the beat of the drum, keep away, keep away. It is not a thoroughfare, there is only one way in. Once entered, I am helpless, I stay here. But you who are outside, look out. Think before entering how painful it is, full of sorrow, to walk the lane of the love. This poem has a deep meaning. I think seekers of the truth would like to explain it for their own self in their own way. Throughout history, there have been families whose legacy is woven into the fabric of spiritual wisdom. This is the story of one such lineage, a family deeply rooted in devotion, guided by the teachings of enlightened masters. To Mahatma Radha Mohan Lal Ji, known as Bhai Sahib, to Mahatma Shri Ravindranath Ji, their journey has shaped generations, nurturing a spiritual heritage that continues to inspire. This short film delves into their lives, their teachings, and the profound impact that they have left on those who follow in their footsteps. Welcome to a journey of faith, tradition, and the eternal search for truth. Good morning. How interesting we meet at the same spot like last night. I was just coming over. So I hope you slept okay? Did you sleep okay? No. No? No, I didn't sleep very much at all. Oh, Interesting. yeah. Oh, God. It's lovely because the sun early comes up down here at certain times. Ah, and it I've lights taken up. it in the winter, yes. You know, in December, coming up here. Right, right. And it's beautiful. It's nice, isn't it? Yes. It really is nice. Yes. Yes, I just stayed awake. This is the place where whatever one has demanded, one has got. It is true, I think all of us have experienced. And it is your destiny that you have come to this place. It is not that you have come to this place by your own self. Then how have you come here? You have come here by virtue of blessings of the teacher. Only there has been some blessings with all of us of our teacher that we have been able to come here, gather here and join this place.
It's incredible. I got a message this morning to say she actually got to her play. A play was made about her life. And that play started 2 days ago on the 29th. And I think she got there to the first night. She actually got there, and I'd never seen her look so bad last Sunday. I'd never seen her, look so shocking, and she was exhausted, and someone had to take the meditation on Zoom for her, and but she bounces back, and she's amazing. Thank you. And I know you all, Mihai told me that you all prayed for her. So thank you. Why this system is? This is for the service of humanity, peace, detachment. Peace, yes. All these qualities are. When I was very young, the one thing I wanted was peace of mind. Yeah. This is when I was a teenager. If you are after that, you will definitely achieve it. I hope so. Not too much time left, well. But you never know. Even one life is not enough. Could be. My father has, on several occasions, my grandfather, my father, they informed that, they advised that even one life is not enough to achieve the peace. Well, this is it. Prasad is more than just an offering. It is a sacred blessing, a gift of divine grace meant to be shared with all. It carries the essence of devotion, transforming the simplest of foods into something holy. The act of packaging prasad is itself a spiritual practice, where every hand that takes part does so with reverence and love. You making chapati? Yes, chapati. Yes, very nice, very nice. Yes, it is. No. तेरे एक चेयर हो चाहिए नहीं तो वो ये पता नहीं I need to know what is it. It's chili. Okay. Param Chanam Satguru Mahatma Ravindra Ji Maharaj, my father-in-law and spiritual mentor, became a guiding presence in my life from 1983 after my marriage to his beloved daughter Deepa. As the eldest grandson of Param Sant Sadguru Mahatma Raghuvar Dayal Chachaji Maharaj and son of Param Sant Sadguru Mahatma Radha Mohan Ji Maharaj, he upheld their spiritual teaching with quiet strength. His life was rooted in simplicity, kindness, and service, principles he passed on to us by example. आशा त्याग शुभ काम करते रहिए, चाहे विधि रखे राम ताही विधि रहिए, कुछ लेना न देना बड़ी तकदीर है तेरी कि तू इस दर पे आया है, बड़ी तकदीर है कि तू इस दर पे आया है, कृपा करके तुम्हें गुरुदेव इस सत्संग में लाया
They all lived with the eternal truth, dived deep in the ocean of bliss and peace without getting impacted by the daily events of the life. Knowing about their journey of the spiritualism implies that to live with the eternal truth is to live under the constant state of bliss and peace, along with the ups and downs of the life. अपने आप आए हैं। So, Namaste. This is Ayush. I am son of Ashok Saxena, grandson of Mahatma Ravindra Saxena, and great grandson of Mahatma Radha Mohan Lal Ji. In the time of Chacha Ji, large number of disciples used to visit him throughout the year at different period of time. So once one of his disciples suggested that why not keep a common day when all the disciples can gather together and have some spiritual talks and discussions. Chacha Ji liked this idea very much. Then he said, no day can be better than the day of my brother's birthday. So his birthday fell on Basant Panchami, which is as per the Hindu calendar. So from that day, from that year, we have started celebrating Basant Panchami. So the main idea about Basant Panchami is we all gather together, we sit together, we have discussion about our buzurgs, we listen to each other's stories, our spiritual experiences. And there are few events in Basant Panchami. The first event is that Om Shanti Jap, followed by a meditation, which is of about 20 minutes, 30 minutes. After that, we have Prasad distribution, which is a holy sweet. After Prasad distribution, we have some bhajans. Bhajans are the devotional songs. And after bhajans, we used to have some food, lunch, dinners. So all these are the events of Basant Panchami. हम लोग ये ओम शांति का जाप शुरू कर रहे हैं और ये उन सभी गुरुजनों बुजुर्गों के लिए है जो शरीर से इस समय हम लोग के साथ नहीं है लेकिन वैसे हैं। उनकी शांति के लिए हम लोग ओम शांति का जाप करते हैं। तो इसका आरंभ कर रहे हैं हम लोग ओम शांति के साथ। ओम शांति। In India, a profound meditative practice takes place using lotus seeds. Guided by a master, participants engage in a silent mantra, mentally reciting Om Shanti with each seed they touch. This meditative journey can involve up to 100,000 repetitions over 2 days, fostering inner peace and tranquility. This practice has been carried out for generations, with the same lotus seeds being used within this family for many years, symbolizing a deep spiritual lineage and tradition. Miriam, do you want to say something? Good evening. Hello, Miriam. Good evening. How are you? I'm great. Good.
Nice to see you. How are you? I'm good. We are starting today's session. What I said, that Guru doesn't want anything. He wants your love, affection, and complete surrender. If your love, devotion, and surrender is 100%, you will achieve anything from Guru. Not in materialistic thing, also in the spiritualism. Radha Mohan Lal ji, his grandfather, was a disciple of Bugao Sharif Abdul Ghani Khan Sahib. In the month of June, he went to his Guru. Can you imagine? That time it was 42, 43 degrees centigrade. And just he went to and gave his respect to his Guru Maharaj. He said, "Oh, okay, you have come, sit down." He said, "Just for 5 minutes," he said. And then his Guru Maharaj, Param Sant Abdul Ghani Khan Sahib said, "Okay, now you can go." He not offered a single glass of water. He not asked him that you stay here for a while so that it can be cooled down. No. He wanted to see how much this my disciple is having faith, love and attachment for me. And that is why he is one of the best disciple of Abdul Ghani Khan Sahib. He has given all his education to Param Sant Radha Mohan Lal. That is, it shown that how much he was having the love, affection and faith on his Guru Maharaj. Hello everyone. Hello. Hey. Hi. Sort of, at the moment, in a way, we're sort of doing almost like a sightseeing tour through to the Samadhi, and I'm pointing out things to nearby, certain places. So,
So it's changed a lot. We now have, and you may see in the video, there's not a metro, which wasn't here 5 years ago. And it's like a bit like the Hammersmith flyover, but smaller and less intrusive. Yeah. Look, this is all new. Right here, with this. Campbell is very interesting because you have all manner of buildings here, and there are still some sort of colonial type, British colonial type houses as well, I noticed on the way from the station. Here is my father. Yes. And my grandfather and great grandfather, Chacha Ji Maharaj. Please come. कानपुर में हमारे चचा जी महाराज की समाधि है और उनके साथ साथ हमारे ग्रैंड फादर श्रीमान महात्मा राधा मोहन लाल जी, उनकी भी समाधि है और उनके बगल में ही हमारे फादर श्रीमान महात्मा रविन्द्रनाथ जी की समाधि है और साइड में हमारे चचा जी महाराज के सबसे छोटे बेटे ज्योति मोहन बाबा जी की भी समाधि है और मेरे बड़े भाई श्रीमान अशोक जी की भी समाधि हमारे फादर के पैर की तरफ बनी हुई है। सच्चे मन से नहीं पुकारा, सच्चे मन से नहीं पुकारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। अगर था गिराना तो फिर क्यों जगाया, सोते ही रहने देते, काहे को जगाया। अगर था हटाना तो फिर क्यों जगाया, सोते ही रहने देते, काहे को जगाया। अब जब जगाया है गुरुजी। Pushpa, do you know? I from the book. Yes, Pushpa is was the landlady of the house in which Tweedy and Lillian stayed. You know, what was the house like? Pushpa, and was it still there? And it's interesting, she was asking us. Could we see where she was? Actually, I cannot locate that house, but I can locate that area. I can show you the post office, which is mentioned in this book. Oh, really? Earlier, where she stayed, opposite the post office, she has mentioned there was a bungalow of red bricks. Right. Where she wanted to stay, but couldn't stay because the house was not vacant. Right.
But that post office available, that Bangalore is not available. That has transformed now. Right. Which area is it? It is in Arinagar. In this path of love, it is not required to put your body to torture. No yogic activity is required. It is absolutely non-violent path. Here, by virtue of the kind grace of the Guru, the disciple is loaded with the spiritual vibes. So this is the, can say it is a substance of this system. I am Ajay Saxena, son of Mahatma Sriman Ravindranath Ji, and my father is the elder son of Sriman Mahatma Radha Mohan Lal Ji, जो कि भाई साहब के नाम से जाने जाते थे, उनके सबसे बड़े बेटे थे। और हमें बहुत खुशी है कि हम सब जो है एक स्पिरिचुअल फैमिली से हैं और हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर और ग्रैंडफादर और माय फादर सब एक बहुत बड़े संत हैं। ये हम लोग के लिए एक बहुत अच्छी बात है कि हम सब उनके परिवार से हैं। मेरे जो ग्रेट ग्रैंडफादर थे श्रीमान महात्मा लाला जी महाराज और श्रीमान चच्चा जी महाराज, इनके जो पेरेंट्स थे, माता पिता, श्रीमान हरबख्श राय जी, वो कायमगंज ज़िले के बहुत बड़े ज़मींदार थे और बहुत ज़मीन जायदाद था, बहुत महल जैसे घर थे, घोड़े घुड़सवार थे, सब नौकर चाकर रहते थे। लेकिन इनके बच्चे नहीं थे। इनकी वाइफ जो थी, जो हमारे लाला जी और चच्चा जी महाराज की जो मदर थी, वो बहुत धार्मिक थी और आध्यात्मिक थी, हर समय पूजा पाठ में ही लगी रहती थी। लेकिन उनको इस बात की बहुत कमी लगती थी कि हमारे परिवार में बच्चे नहीं हैं। तो एक बार इनके महल के बाहर राजा साहब कहीं गए हुए थे, तो महल के बाहर एक कोई सन्यासी आए और उन्होंने भिक्षा मांगी, भिक्षा में खाना मांगा। तो इनकी नौकरानी ने अंदर जाके मालकिन को बताया कि बाहर कोई महात्मा जी आए हैं और वो खाना मांग रहे हैं। तो इनकी मदर बोली कि जाके उनको जो है भी खाना है अपने घर पे, वो जाके उनको खिला दो अच्छे से, प्यार से, और देखो कोई कमी ना रहे खिलाने में। तो वो नौकरानी उनके लिए खाना परस के ले गई और खाना उनके सामने रखा। लेकिन महात्मा जी बोले कि बेटा, हमें ये खाना नहीं खाना है, हमें मछली खाने की इच्छा हो रही है, तो हमें मछली खिला दो तो हमें तृप्ति हो जाएगी। तो वो बोली कि महात्मा जी, हमारी यहाँ मालकिन के यहाँ मछली तो बनती नहीं है, तो हम मछली आपको कैसे खिलाएं? तो वो कह रहे ये हम नहीं जानते, लेकिन कहीं से इंतज़ाम हो जाए तो हमें खिला दो। तो वो अंदर गई और उसने मालकिन को बोला कि जो महात्मा जी आए हैं वो ये खाना नहीं खाने को तैयार हो रहे हैं, उनको मछली खानी है, तो लेकिन मछली कैसे दी जाए? तो मालकिन ने भी यही कहा कि मछली तो अपने यहाँ बनती नहीं है, तो हम लोग मछली कैसे दें? तो नौकरानी ने उनको एक सुझाव दिया, आइडिया दिया कि अपने पड़ोस में जो रहते हैं उनके यहाँ अक्सर राजा साहब के लिए मछली बनती है, तो कहिए तो हम उनके यहाँ से देख लें, अगर मिल जाए तो ले आते हैं। तो मालकिन ने हाँ भी भर दी कि हाँ देख लो, मिल जाए तो ले आओ। तो वो नौकरानी पड़ोस के घर में गई और उनसे पूछा कि आपके यहाँ मछली हो तो दे दीजिए, कोई आए हैं भिक्षु, उनको खिलाना है। तो उन्होंने, उनके घर में बाई चांस मछली बनी हुई थी, तो उन्होंने नौकरानी को दे दी कि ले जाओ। तो ये ले आई और ले जाके उनको सन्यासी को खिला दी। सन्यासी वो मछली खा के बहुत खुश हुए और प्रसन्न हुए। तो वो बोले जो मांगना हो मांग लो। तो उस समय की नौकरानियाँ भी सब इतनी वफ़ादार सब होती थी और घर की जैसी ही होती थी, तो उन्होंने अपनी मालकिन के लिए मांगा। उसने, नौकरानी ने कहा कि महाराज, हमारे मालकिन और मालिक के पास सब कुछ है, सब ज़मीन जायदाद है, सब घोड़े हैं, सब कुछ है, लेकिन इनके पास घर में बच्चे नहीं हैं, इनके कोई बच्चे नहीं हैं। तो कुछ ऐसा करिए कि इनको भी बच्चे मिलें और इनके घर में भी किलकारियाँ गूंजें। तो महात्मा जी कुछ बोले नहीं और ऊपर हाथ उठाते हुए 1 2 1 2 कहते हुए 3 बार कहा और चले गए वहाँ से। उसके कुछ ही समय बाद पता चला कि उनके परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ है। सन
1873, 2 फरवरी 1873 को तो एक बच्चे का जन्म हुआ। उसके बाद ठीक 2 साल बाद दूसरे बच्चे का भी जन्म हुआ 7 अक्टूबर 1875। तो इस तरीके से उस परिवार में 2 बच्चों का जन्म हुआ। ये दोनों ही बच्चे उनकी दुआ से बहुत बड़े आगे चल के संत बने, जो कि एक श्रीमान महात्मा रघुवर दयाल जी और चचा जी महाराज के नाम से जाने गए, और बड़े वाले भाई इनके श्रीमान रामचंद्र जी महाराज, लाला जी महाराज के नाम से फेमस हुए। इन दोनों के ही एक गुरु जो थे वो मुस्लिम थे। ये दोनों बच्चे जब धीमे धीमे बड़े होने लगे तो इनके घर में कठिनाइयों ने घेर लिया, मुसीबतों का पहाड़ आने लगा। धीमे धीमे इनके घर का ज़मीन जायदाद सब छिन गई, इनकी माँ की भी मृत्यु हो गई, और कुछ ही दिनों बाद इनके पिताजी की भी मृत्यु हो गई और ये लोग घर से बिल्कुल बाहर हो गए। कुछ समय ये लोग परेशानियों में रहे, फतेहगढ़ में आके रहने लगे एक कमरा लेके। वहाँ ये पढ़ने दोनों बच्चे जाते थे तो रास्ते में एक गुरु महात्मा जी बैठे रहते थे कुर्सी डाले और आग तापते रहते थे। तो ये लोग आते जाते उनको सलाम करते थे, सलाम पेश करते थे, नमस्ते करते थे आते जाते। तो वो बहुत खुश होते थे इन बच्चों को देख के, और एक खिंचाव सा आता था दोनों में। उनको भी लगता था कि ये बच्चे कुछ खिंचाव कर रहे हैं, उनका मन करता था उनसे बात करने का, मिलने का। तो एक बार की ऐसी बात है कि ये दोनों बच्चे जो थे स्कूल से लौट रहे थे मदरसे से अपने, और पानी बरस रहा था। तो ये बुज़ुर्ग जो थे अपने घर के बाहर बैठे कुर्सी पे और आग से ताप रहे थे। तो महात्मा जी बोले कि बेटा तुम लोग बरगुड़ार कहाँ जा रहे हो? तो ये बोले हम तो अपने कमरे में आते। कहला ऐसा करो कपड़े बदलाओ, भीग गए हो, और कपड़े बदल के आके यहाँ बैठ जाना। तो ये दोनों लोग बच्चे गए वहाँ, उन्होंने कपड़े बदले और आ करके महात्मा जी के पास बैठ गए। उन्होंने आग जला रखी थी, अपना कंबल उठाया और कंबल उठा करके इन लोग को ओढ़ा दिया। कंबल ओढ़ने के बाद इन लोग को पता ही नहीं चला कि कब रात बीत गई, कब सुबह हुआ। और ऐसी एक शक्ति की उनको एहसास हुआ कि सुबह उठने के बाद जैसे लगा पता नहीं कौन सी शक्तियाँ उनको मिल गई, किन शक्तियों से उनको नवाजा गया। तो वो रात ऐसी रात थी कि उन गुरु महाराज ने इन लोग को खूब शक्तियाँ प्रदान कर दी, और उस दिन से ये लोग दोनों भाई उन्हीं के होके रह गए। कुछ समय बाद वो गुरु महाराज जो थे, बुज़ुर्ग जो थे, वो वहाँ से छोड़ के रायपुर चले गए अपने गांव। तो वहाँ पर भी ये लोग दोनों भाई सुबह शाम आते जाते थे, जो कि 20 किलोमीटर दूर था इनके घर से। तो इतनी दूरी भी ये लोग रोज़ जाते थे, रोज़ वापस आते थे, कोई दिन नागा नहीं करते थे। इतना इनको लगाव था, इतना प्यार था उनसे कि ना उनका मन मानता था ना इनका मन मानता था, और उनसे ये आध्यात्मिक शिक्षा लेते रहे। और उधर एक बार इनके गुरु महाराज जो थे, जो श्रीमान फजल अहमद खान साहब थे, उनके गुरु को भी सपना आया था कि तुम्हारे पास 2 हिंदू बच्चे आएंगे, उनको ये शिक्षा प्रदान करना है। तो उन्होंने अपने शिष्य श्रीमान फजल अहमद खान साहब को ये आदेश दिया था कि मेरे पास तो ये बच्चे नहीं आए हैं, तुम्हारे पास ज़रूर आएंगे ये दोनों हिंदू बच्चे, तो उनको ये शिक्षा प्रदान करना। तो इस तरीके से उनके दोनों बच्चों की उनके पास ये आध्यात्मिक शिक्षा चलती रही। एक समय ऐसा आया कि जब उनका भी अंतिम समय आया तो उन्होंने कहा ऐसा करो कि अब तो मेरा अंतिम समय आ गया है, इसके आगे की शिक्षा के लिए तुम्हें मेरे जो गुरु भाई हैं भवाओं में रहते हैं, श्रीमान अब्दुल गनी खान साहब, तुम लोग उनके पास जाना और उनसे आगे की शिक्षा प्राप्त करना। तो उनके ना रहने के बाद ये दोनों भाई ने उनके आदेश का पालन किया और उन्हीं के पास भवाओं श्रीमान अब्दुल गनी खान साहब के पास जाने लगे। इस तरीके से हमारे जो ग्रेट ग्रैंडफादर थे दोनों, उन दोनों के 2 गुरु हुए। पहले गुरु थे श्रीमान फजल अहमद खान साहब और दूसरे गुरु थे उनके अब्दुल गनी खान साहब। Hello, sir.
Oh, outside. Elder brother. महात्मा रामचंद्र जी महाराज। Isn't that amazing? It's another type. उनके जो पहले गुरु थे श्रीमान महात्मा श्रीमान फजल अहमद खान साहब, उनकी समाधि रायपुर में बनी है। हमारे परिवार में हमारे पापा ने बाबा ने हम लोग को हमेशा यही कहा कि ये जगह ऐसी है कि कभी इनके पास जाना मत छोड़ना। ये सब जीवित समाधियाँ हैं, साल में एक बार इनके पास ज़रूर जाना, जिससे हमेशा इन लोग की तुम्हें याद बनी रहे। तो हम लोग उन्हीं का हुक्म का, उनके आदेश का पालन करते हैं कि जब जब मौका मिलता है तो ज़रूर जाते हैं। नहीं मिला तो एक बार तो साल में ज़रूर इन सारी समाधियों पे हम लोग दर्शन करने जाते हैं, और सबको जाना भी चाहिए। You are not in the picture. Well, you will always know I am behind the camera. Guru Maharaj, Guru Maharaj, and his son and his wife. Okay, Guru Maharaj here. Yeah.
What happened? Well, it's just they built the road. The road wasn't there. Oh, It was just it? held completely quiet. Oh, this is new. Okay, I didn't know. Yeah, it was a dirt road, and now it's a motorway. Yeah. श्रीमान चच्चा जी महाराज के जो बड़े भाई थे, श्रीमान महात्मा रामचंद्र जी, उनकी समाधि फतेहगढ़ में बनी है। और इन दोनों बाबाओं के जो गुरु महाराज थे दूसरे नंबर के, श्रीमान अब्दुल गनी खां साहब, उनकी समाधि भोगांव मैनपुरी ज़िले में बनी हुई है, जहाँ पर हम लोग सब लोग जाते हैं। In meditation, what we do is we just sit silently in the comfortable position. We don't need to be sit in this position. We can lay down also, but preferably our back must be erect. And during meditation, we imagine that our Guru is sitting in front of us, and a ray of light, of white light, is coming through his heart and entering to our heart, and through our heart it is spreading to the whole body. By imagining all this, we automatically get the energy of the superiors in ourselves. उसके बाद हमारे बाबा श्रीमान महात्मा राधा मोहन लाल जी, उनके बाद न रहने के बाद उन्होंने सत्संग के कार्यभार को संभाला और बहुत अच्छे से किया, जो कि भाई साहब के नाम से फेमस हुए। और उनके पास एक अंग्रेज़ लेडी जो कि इरीना ट्विडी के नाम से जानी जाती हैं, वो उनके पास एक समय आई, और वो भी जब आई तो उन्हीं की होके रह गई, उन्हीं में लग के रह गई। और जब तक हमारे बाबा रहे तब तक वो यहाँ रहीं, और उसके बाद उन्होंने अपने देश लंदन में जा कर के इस आध्यात्मिक के कार्य को आगे बढ़ाया, और वहाँ पर भी बहुत से लोगों को जोड़ा है, और आज तक सब जुड़े हुए हैं। और हमारे बाबा श्रीमान राधा मोहन लाल जी के बाद हमारे पापा सबसे बड़े बेटे थे उनके, श्री रविंद्रनाथ जी, तो उन्होंने भी इस कार्य को बाखूबी निभाया और सत्संग के कार्य को किया। और उनके साथ भी बहुत से लोग जुड़े, विदेशी लोग भी जुड़े, यहाँ के भी लोग जुड़े, और आज तक सब ऐसे ही आते हैं। तो ये सिलसिला हमारे यहाँ ऐसे ही चला आ रहा है और ऐसे ही आगे चलता रहेगा, हम उम्मीद यही करते हैं। Several people would come to my grandfather, of which Mrs. Lillian Silver from France and Mrs. Irina Tweedy from England were the most devoted. Like I remember Lillian and Tweedy coming to my grandfather. Lillian was like a family member and free to visit every corner of this big house. She would talk to everyone. It was a very big house spreading over 2200 square yards of the land and a big courtyard. In the middle, large corridor along the width of the courtyard, thereafter big rooms surrounded by large open land covered with big trees
and garden in front. Since I was the only child amongst the large family of the uncles and aunties, grandfather, grandmother, granduncle, and grandaunts, I was dear to everyone. And likewise, Lillian was also very affectionate to me. She would bring toys for me, like a wooden house which I shared with my younger sister. I remember Miss Lillian and Tweety coming to my house, sitting with my grandfather in the room and sometimes in the garden, in the state of complete silence, sometimes talking with my grandfather and several other disciples sitting in front of him. I was only 7 years of the age when my grandfather departed, and thereafter she never came to Kanpur except once in 1975 when I could not meet her. Thanks to Mirail, she gave me a book during the recent Basant Bhandara, Lillian Silver, A Mystical Life. And I am very grateful from the bottom of my heart to Miss Jacqueline Chambron, who wrote this book by compiling correspondence between Lillian and my grandfather, and also contents from her diary which she maintained under the instructions of her teacher, that is Mahatma Radha Mohan Lal Ji. Through this book, I could know about the Lillian's visit to my grandfather. In April 1950, when Lillian met my grandfather, he asked, "What do you really want?" She replied, "Absolute and nothing else." When she was 22, she met Madame Turk, a great clairvoyant of the time, and she predicted that a luminous hour will illuminate your life. His name will begin with letter R. करके उसे पाया हमने, घर फूक के हमने ये तमाशा देखा। मैं क्या कहूँ उल्फत में असर क्या देखा। मैं क्या कहूँ उल्फत में असर क्या देखा। मतलूब को तालिब में समाया देखा। मतलूब को तालिब में समाया देखा। उस शाख
तो माशूक में हो जाते हैं महो, माशूकों को उशाक का शैदा देखा। हम लोग भाई सब एक आध्यात्मिक फैमिली से जुड़े हुए हैं और बहुत अच्छा है, ये बहुत खुशी की बात है। हमारे परिवार के सब बच्चे और हम लोग सब इसी काम में लगे रहते हैं। हमारे परिवार में जो भी आता है तो उसको हम लोग इसी उसमें जोड़ के रखते हैं। और आध्यात्मिक का मतलब ये नहीं होता है कि हम लोग किसी पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा लगे हों। आध्यात्मिक का मतलब ये भी होता है कि दूसरे की जो भी अपने साथ हैं या हमारे घर परिवार में आए हैं, हम लोग उनकी सेवा भाव रखें, उनसे मोहब्बत रखें। हमारी घर की जो पूजा है वो यही है कि दूसरों की सेवा करना, माता पिता की सेवा करना, आने जाने वालों की देखभाल करना। और वैसे भी ये कहा गया हमारे घर में कि ये प्रेम की पूजा है, दिल की पूजा है, दिल से पूजा की जाती है। इसमें कोई दिखावे की ज़रूरत नहीं होती है, इसमें एक दूसरे से मोहब्बत की और प्रेम की हम सबको ज़रूरत होती है। तो इस तरीके से ये अध्यात्म चलता है। कोई ऐसा मतलब बहुत ख़ास इसमें ऐसी चीज़ नहीं है। मेन चीज़ इसमें यही है कि हम लोग एक दूसरे को कितनी प्यार दे सकते हैं, कितनी मोहब्बत दे सकते हैं, तो यही हम लोग को सबको रखना चाहिए। तो बाबा ने हमारे जो श्रीमान राधा मोहन लाल जी थे, तो उन्होंने उनसे कहा कि तुम हमसे प्रेम करो तब कुछ सीख पाओगी। तो उन्होंने कहा कि हम आपसे प्रेम कैसे कर सकते हैं, आप तो इतने बड़े हैं। और हम तो उन्होंने कहा कोई करने की ज़रूरत नहीं होती है, ये अपने आप होता है। लेकिन वो भी ये कहती नहीं कि नहीं ये कैसे हो सकता है। लेकिन धीमे धीमे एक समय ऐसा आया कि उनको इतना उनसे लगाव हो गया कि वो हमारे बाबा को छोड़ के गई नहीं। जब तक उनकी ज़िंदगी रही हमारे बाबा की, तब तक वो यहीं रही और उनसे आध्यात्मिक शिक्षा लेती रही। Years later, grandfather tells of the first encounter with the Lillian to search Bhograph about the dream that he saw very beautiful beings coming from the distant places who would be his true disciples. As soon as she entered the room, he recognized her, one of them, and in the same way for the search Bhograph also. I believe that we are blessed that two such personalities and disciples of the great Miss Lillian, Jacqueline Chambron in France, and that of great Mrs. Tudy, Miss Miriam in England, are spreading fragrance of the spiritual energy in Europe, and several persons are getting benefited. Once Tudy asked, why is it that one cannot go on by oneself any further and would need a guru? He replies, by yourself alone you can never go beyond the level of the mind. How can you vacate? Tweedy further asked, you mean to empty the mind to clear it from thought? Grandfather replied, yes. How can you vacate, clear out your mind? How can the mind empty itself of itself? You must be able to leave it, forget everything, and this one cannot do alone, for the mind cannot transcend itself. एक्चुअली हम लोग सब एक तरीके से देखें तो हम लोग सब उन्हीं के ही हैं, भगवान के ही हैं, और हम सब में उन्हीं का अंश होता है। लेकिन हम लोग इस दुनिया में रहते रहते अपनी जो वास्तविकता है उसको भूल जाते हैं और अपने जो सामाजिक कार्य हैं, सोशल एक्टिविटी जो है, हम लोग उसी में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हम लोग असलियत को तो सब भूल ही जाते हैं। जैसे जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसको हम लोग कहते हैं भगवान का रूप है। क्यों कहते हैं? वो इसीलिए कहते हैं कि वो बिल्कुल नया आया है, शुद्ध है, और उसमें कहीं कोई इस समाज की कोई गंदी चीज़ें, कोई भी गलत काम की चीज़ें उसके ऊपर अभी छाया नहीं पड़ी है, तो वो बिल्कुल शुद्ध है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि ये भगवान का ही रूप है। तो लेकिन जैसे जैसे वो धीमे धीमे बड़ा होता है तो उसके ऊपर ये समाज की जो छाया है, वो जो गंदी छाया है, वो पड़ने लगती है और वो अशुद्ध होने लगता है। तो लेकिन अगर हम लोग अध्यात्म से जुड़ते हैं, किसी गुरु से जुड़ते हैं,
तो हम लोग के अंदर की जो गंदगी है वो एक गुरु वो हम लोग के अंदर गंदगी को निकाल देता है, बाहर खींच के बाहर फेंक देता है और हम लोग को फिर से शुद्ध करने की कोशिश करता है। तो हम लोग के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि किसी भी अध्यात्म में जुड़े होना ज़रूरी है, किसी गुरु से जुड़े होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गुरु ही ये काम कर सकता है। जैसे हम लोग कोई गाड़ी खरीदते हैं, चलाते हैं और साल में 6 महीने में एक बार सर्विस करने भेजते हैं तो वो फिर से अच्छे होकर चलने लगती है, वैसे ही हम लोग का भी ये शरीर है। हम लोग भी जो है इस समाज में रह करके तरह तरह की एक्टिविटी करते करते हम लोग बुरे कामों में भी फंस जाते हैं। तो उस चीज़ से निकलने के लिए हम लोग को ज़रूरी है कि हम लोग किसी आध्यात्मिक सेंटर या किसी गुरु से ज़रूर जुड़े हों। अगर हम एक गुरु से जुड़ जाएंगे तो हमारे अंदर की जो बुराइयां हैं वो निकाल के बाहर कर देंगे और हम लोग फिर से शुद्ध होंगे और भगवान में लगे रहेंगे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है और भगवान के ही अंश हैं, तो उसमें हम लोग का जुड़ा रहना और उनके से ही लगे रहना बहुत ज़रूरी हो जाता है। One who saw the glory of my beloved, he could not appreciate the world again. I found him only after I burnt my own self. I saw the divine drama after I burnt my arrogance. شود به چهره زرد من نظری برای خدا کنی، چه شود به چهره زرد من نظری برای خدا کنی، اگر کنی همه درد من به یکی نظاره دوا کنی، کمان کشیده و در کمی که زنی به تیرم و من غمی، کمان کشیده و در کمی آهای وای دای. Means I will talk about you before every person. Very good. Right? Yes. तेरी चर्चा हम करेंगे, तेरी चर्चा हम करेंगे हर बशर के सामने, हर बशर के सामने। तेरी चर्चा हम करेंगे, तेरी चर्चा हम करेंगे हर बशर के सामने, हर बशर के सामने।